guys, this is me Anjali and you're watching PrettyPOP. So in today's video, I'm going to show you this beautiful Arabic sexy eyes. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस वीडियो को क्या टाइटल दूं क्योंकि ये बहुत ही सिडक्टिव सा ब्लू आई मेकअप है विद कट क्रीज ये और इसमें मैंने जो लाइनर है वो थोड़ा सा अरेबिक लुक दिया है तो ये एक अरेबिक आई मेकअप हो गया मीन सब कुछ मिक्स सा हो गया है बट बहुत ही प्रिटी एंड बहुत ही ईजी तरीके से बन गया ये आई मेकअप। सो आप वीडियो पे जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आया हो गाइस देन प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल में बताया है और स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर चली हूँ इस आई मेकअप को तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा एंड तो आप चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। Guys, I'm going to start with my eyebrows and for this today I'm going to use my eyeshadow palette. Yeah, and for this I'm going to use my Makeup Revolution Ultra eyeshadow palette. So this is the palette और इसके अंदर आपको 32 shades मिल जाते हैं, some shimmery kind of and some matte kind of shades. So I'm gonna pick a little bit brown shade for my eyebrows, this one, this shade I'm going to use for my eyebrows and I'm going to use this kind of angular brush. So I just take a very small stroke at a time and I'm going to fill my eyebrows and I am following my natural eyebrows. Let's move on and now I'm going to prime my eyes because I have some discolorants on my eyelids and my upper crease area, so I want to cancel out that darkness and for this I'm going to use my Maybelline Age Rewind concealer, this one, and this concealer is really good guys, you should try at once at least. So I'm in shade light medium. Okay, so I'm taking a little bit product on my eyes like this and some product I would like to apply on my under eye area because later we will apply some eyeshadow for lower lash line, that's why. Now I'm going to blend this with my beauty blender and this is a very tiny beauty blender. So just tap and only tap. And guys मैं अपने eyebrows के जो आसपास का एरिया है उसको भी क्लीन करना चाहूँगी जिससे मेरी eyebrows जो है वो बिल्कुल sharp and pointed लगे. So first of all I'm going to apply my transition shade and for this I am choosing a very light shade, light brownish shade for my transition color. So guys eye makeup start करने से पहले मैं अपने brow bone area पर एक white या फिर skin kind of shade स्किन टाइप ऑफ शेड कुछ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। रीज़न इसका ये है कि उसकी वजह से जो मेरा आई मेकअप आएगा वो बहुत ही अच्छे से पॉप आउट होगा एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे ये ट्रिक बहुत ही पसंद है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वेरी लाइट शेड फॉर माई ब्रो बोन एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हम कोई भी कंसीलर ब्रश या फिर जो भी आपके पास छोटा सा ब्रश है आप उसकी हेल्प से यहाँ पर बेसिकली दिस एरिया आप यहाँ पर इसको लगाइए। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि ये पहले ही अपने ब्रो बोन एरिया पर कलर अप्लाई कर रही है बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है गाइस। तो आप देखते रहिए कि मैंने ये क्यों लगाया है, किस लिए लगाया है, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। So now I'm going to use my transition shade and I am taking very small product on my brush and extra को हमने tap it off कर लिया है। अब ये जो हमारा upper crease area है वहाँ पर हम अपना transition shade लगाएंगे। And then I'm using this blue shade for my outer V area. इस तरीके से
से हम अपने सेकंड ट्रांजिशन कलर हम लगाएंगे, जो कि मैंने अपने क्रीज लाइन पर लगाया है। इधर इस साइड पर मैंने इसे अप्लाई किया है, दिस साइड। इससे क्या होगा कि आपकी जो क्रीज है उसको डेप्थ मिलेगी, और अगर आपकी आईज छोटी दिखती है तो वो थोड़ी सी बड़ी लगने लगेंगी, क्योंकि आपकी आईज को डेप्थ मिल जाएगी। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से हम सारे कलर को आपस में मर्ज कर देंगे। I'm going to use my mascara, and this is from Lancome, और मैं इसको अपने लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी। एंड देन मैं लाइनर, विंग लाइनर नहीं बनाऊंगी, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेरी जो आईज़ हैं वो रैबिट लुक दे रही हैं। सो जस्ट अपने फॉल्सीज़ के स्ट्रैप को हाइड करने के लिए मैं उसके ऊपर ये लिक्विड लाइनर है लैक्मे एब्सोल्यूट का, वो मैं लगाऊंगी, जिससे कि जो उसका बैंड है वो ना दिखे। सो वैसे दिख तो रहा नहीं है। today's video. I hope you really enjoyed it and I hope कि आप लोगों को मेरा ये beautiful सा look पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है then please guys do subscribe my channel, share this video with all your friends and family and please guys मुझे बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अपने अच्छे आइडियाज़ देते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी सारे लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और अपने सारे मेकअप जो भी मैंने यूज़ किया है उनकी सारी डिटेल्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। और अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।